Hello friends, आज की वीडियो में I'm gonna share with you ways you can develop your kids' interest into books and you can divert them from mobiles or TVs or any kind of screens. If you're new on my channel, I'm Vidya. I'm a mother of a 2-year-old and I make videos to make parenting easy and fun. Welcome on Mom, I'm home. So to begin with, if we have to divert our kid from mobile to books, then हमें उसे उतना ही इंटरेस्टिंग या उतना ही फन या इंटरेक्टिव बनाना होगा जितना कि मोबाइल या टीवी के कंटेंट होता है. तो उसके लिए आई टुक सम स्टेप्स एंड आई डिड सम चेंजेस एट माई होम. तो सबसे पहले आई ऑर्गेनाइज एंड असेंबल्ड अ रीडिंग कॉर्नर फॉर वंशु. मेरे बेडरूम में एक छोटा सा स्पेस या एक्सटेंशन था एंड आई यूज इट टू ऑर्गेनाइज वंशुज टॉयज़. मैंने वहाँ पर फ्लोर पर मैट्रेस रखा एंड देन आई स्प्रेड द बेडशीट एंड कुछ छोटे पिलोज रखे एंड इन अ बास्केट आई केप्ट सम बुक्स, added a light, and it is now a complete cozy environment for reading books. And there are some more books in the bookshelf which is accessible to him. And another reading corner is in the room where his playpen is. Yes, I invested in a playpen and about that I'll tell you in some other video. And here also in this room I kept books in a shelf जो कि बिल्कुल वंशु के हाइट के थे. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट दैट बुक्स जो हैं बच्चों के एक्सेसिबल लेवल पे हों ताकि वो जब चाहें जो बुक चाहें दे कैन टेक आउट एंड दे कैन रीड. और मैंने यहाँ पे एक कार्पेट ऐड किया, वहाँ पर एक वंशु का चेयर रखा एंड बस मैंने एक डाइपर का एक बॉक्स रख दिया दैट ही यूजेस टू प्लेस द बुक एंड ही सिट्स ऑन द चेयर एंड रीड्स. मुझे एक्चुअली कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. ही डज इट हिमसेल्फ एंड हाउ आई डेवलप्ड इन हिम सच इंटरेस्ट इन बुक्स दैट आई एम गोना टेल यू. फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि मैंने बहुत पहले से शुरुआत कर दी थी. आई थिंक आई इंट्रोड्यूस वंशु टू बुक्स एट द एज ऑफ 3 months. Yes, that early, and if you haven't, then still it is not too late. Whenever you do, just do it as an everyday activity. And if I am busy all day, then I keep it as a bedtime routine. And एक चीज़ मैंने observe की है कि repetition is the key with small kids. They have like very short-term memory, and until unless thing is repeated again and again, they don't develop that bond with that. एंड मैं कोशिश करती थी एक टाइम ड्यूरेशन या टाइम जोन में 1 या 2 बुक्स में ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती थी. आई यूज्ड टू रिपीट एंड रिपीट until he develops that bond with that character's story or book. Yes, book and story characters से कैसे दोस्ती कराएं, that is actually the best and fun part. And this is the part where you actually make it more entertaining compared to mobiles. तो बच्चों की बुक रीडिंग को कहा जाता है कि यू मस्ट रीड आउट लाउड, बट वॉट आई एक्चुअली से इज़ यू मस्ट एक्ट आउट लाउड. So you have to do a bit of acting, give every character a voice, different tone, different variation within sound and pitch when you are reading. If you want me to give an example, I will give it to you quickly. If I say this line, an owl saw the mouse and the mouse looked good. Where are you going, little brown mouse? So rather than saying just like this, if I say, an owl saw the mouse and the mouse looked good. Where are you going, little brown mouse? Come have tea on my treetop house. Yeah, it sounds very funny and very childish, but बच्चों को चाइल्डिश चीज़ें ही पसंद आती हैं. मुझे भी नहीं आता था हाउ टू रीड स्टोरीज टू किड्स एंड आई वॉच मैनी स्टोरी टेलिंग और बुक रीडिंग वीडियोज़ एंड आई टू लर्न फ्रॉम देम. एंड इनफैक्ट अगर आपको ट्रांजिशन कराना है या डाइवर्ट करना है बच्चों को टीवी या मोबाइल कंटेंट से, देन शो देम दीज वीडियोज़ एंड देन यू शिफ्ट टू द बुक्स. दिस विल हेल्प इन डूइंग दैट ट्रांजिशन. When they see that content in the mobile which they are used to and then you bring back to the books, then that books become relatable to them. When they see the pages being turned on the mobile and in the real life they can turn the pages on the book, then it becomes interesting for them. और कुछ फेमस बुक्स के एनिमेशन या मोशन पिक्चर्स भी होते हैं. यू कैन शो देम एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स इन डूइंग दैट ट्रांजिशन. When they see the pictures in the book, then they can relate to those characters. And when they develop interest in the book, then stop showing those motion pictures. And book reading को और interesting बना सकते हैं when you make it more interactive. I used to leave some sentences incomplete and what I found that Vanshu used to complete those sentences for me. ऐसा करते हुए he used to feel very accomplished and used to feel very happy when he used to finish those sentences.
That way it becomes really interactive for them. And one thing you can also do is let them turn the pages as you finish the sentences. This is like very real time interaction with the book, and they also learn patience, and means they have to wait till you finish the sentence and then only they can turn. और एक तरीका है to make it more interactive, you can use puppets and give them voice. मैंने अभी recently एक mouse puppet बनाया था, you might have seen in the video. Or like if you are teaching any learning books, then you can show the real vegetables here, show them real fruits. But the most important factor I would like to say is the selection of books. यूज़ वेरी गुड एंड वेरी एज अप्रोप्रिएट बुक्स, जैसे बच्चों का एज है वैसे टाइप की बुक्स लें. इसके ऊपर पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट. उसमें मैंने बताया है कि किस टाइप के किन वेराइटी ऑफ बुक्स लेने चाहिए बच्चों के लिए. So these are the few things that you have to keep in mind, then definitely your kid will also fall in love with books. So do share this video, and if you like my videos and my channel, please do subscribe to it. I upload new videos every week, and don't forget to add your suggestions in the comment section. और अगले वीडियो में मिलते हैं. Till then, take care. Bye bye.